Hello friends, welcome to my channel. Today we start Circle of Willis. Circle of Willis एक हेक्सागोनल आर्टियल सर्कल है जो होता है कहाँ पे, बेस ऑफ स्कल पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होगा और इंटरपेडिकुलर सर्कस में प्रेजेंट होता है। ये मेनली 3 पिलर्स पे प्रेजेंट होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये 3 पिलर्स हैं इसके ऊपर। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये सबसे एंटीरियरली क्या होगा, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर क्या होगा, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटेरोलेटरली होगा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टेरोलैटरली होगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 2 ब्रांच देगा, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी देगा और फिर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी देगा। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्रांच देगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बैसिलर आर्टरी का ब्रांच है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बैसिलर आर्टरी का ब्रांच है। बैसिलर आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी का ब्रांच है। तो वर्टिब्रल आर्टरी लोअर पोन्स पे ज्वाइन करता है और बनाता है बैसिलर आर्टरी, और बैसिलर आर्टरी अपर पोन्स पे डाइवर्ज करके बनाता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होता है उसकी एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कम्युनिकेट करती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से। बैसिलर आर्टरी के 5 ब्रांचेस हैं। पहला B4 बैसिलर आर्टरी, B4 बैसिलर आर्टरी, S4 सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, L4 लैब्रिंथाइन आर्टरी, P4 पोंटाइन आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, A4 एंटेरो inferior cerebellar artery. Lower pons. There are three branches of circle of Willis: cortical branch, central branch, choroidal branch. Cortical branch is formed by anterior, middle और posterior cerebellar artery. इसके अंदर क्या होता है कि ये एनास्टोमोसिस फ्रीली एनास्टोमोस करता है, और इसमें अगर कोई भी ब्लॉकेज हुआ तो ये क्या करेगा, फ्रीली स्मॉल इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन करेगा। सेंट्रल आर्टरी जनरली एनास्टोमोस नहीं करता है और ये सप्लाई मतलब पियर्स करके वाइट मैटर को थैलेमस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है। सेंट्रल आर्टरी के अंदर अगर ये ब्लॉकेड हुआ तो ये लार्ज इन्फार्क्ट बनाएगा। कोरोइडल आर्टरी बनता है, ये कोरोइडल प्लेक्सस ऑफ वेरियस वेंट्रिकल्स को सप्लाई करता है। ब्रांचेज हो गए डिफरेंट ब्रांचेज। देन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दिस इज रिकरेंट branch of anterior cerebral artery. Recurrent branch of anterior cerebral artery. Branch of anterior cerebral artery. Anteromedial group. This is anteromedial group. Anteromedial group. This is anterolateral group. Anterolateral group. This is posterolateral group. Posterolateral group. Posteromedial group. Posteromedial group. There is 2 choroidal artery, anterior choroid artery, posterior choroid artery. Anterior choroid artery is a branch of middle cerebral artery. This is anterior choroid artery. And posterior choroid artery is a branch of posterior cerebral artery. Posterior choroidal artery. As we have already said that this is superior cerebellar artery, superior cerebellar artery. This is basilar artery, labyrinthine artery. This is pontine artery, antero inferior cerebellar artery. Lower pons, vertebral artery join at lower pons to form the basilar artery. Vertebral artery in the lower part give 2 branches, medullary branches and the meningeal branches. Two branches of vertebral artery join together to form the anterior spinal artery. Vertebral artery give posterior spinal artery. Anterior and posterior spinal artery supply spinal cord.
posterior spinal artery. Antero-inferior cerebellar artery. So this is posterior-inferior cerebellar artery. Posterior-inferior cerebellar artery. Now revise. Formation of circle of Willis by anterior cerebellar artery, anterolaterally, anteriorly by anterior communicating artery, posteriorly by posterior cerebellar artery, posterolaterally by posterior communicating artery, which is a branch of posterior communicating artery. Anterolaterally by internal carotid artery. Then basilar artery. The branch of basilar artery are B for basilar artery, S for superior cerebellar artery, L for labyrinthine artery, P for pontine artery, and P for posterior communicating artery. A for antero-inferior cerebellar artery. This is a branch of basilar artery. Then vertebral artery. Vertebral artery give medullary branch, laterally, medially meningeal branch. The two branches of vertebral artery join to form anterior spinal artery and posterior spinal artery, posterior inferior cerebellar artery. The posterior inferior cerebellar artery and anterior inferior cerebellar artery supply the cerebellum. Then anteromedial group, anterolateral group, anteromedial group and anterolateral group. Posteromedial group, posterolateral group. Posterolateral group by posterior communicating artery, posterior cerebral artery, and posterior choroidal artery by posterior cerebral artery. Posterior medial group by posterior cerebral artery. Posterior communicating artery, anastomose between posterior cerebral artery and middle cerebral artery. Anterior lateral group is a middle branch of middle cerebral artery. Anteromedial group is a branch of middle cerebral artery. Anterior recurrent branch of anterior cerebral artery laterally. Anterior choroidal artery, which is a branch of middle cerebral artery. This is completion of the circle of Willis. Thank you. Do like, subscribe.